A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the verses of Holy Quran. In the previous session, we was discussed about the definition and overview of science, engineering, and technology, and how they are interlinked to develop and provide the solution to the mankind and provide the solution towards the industrial, commercial, and residential real world problems. So, without the influence of science, engineering, and technology, we cannot sustain even in the society. So, that was the first part of previous session, and now we further moving towards the next part of previous session, which was the introduction to the physics. So after the introduction, we was discussed about the basic quantity in physics, which are length, mass, time, temperature, and electric current. I also explain all these things with the proper their definitions. After that, the symbolic representation of these five basic physical quantities, their representative symbol, their units, SI units, and SI unit representative symbols. After basic quantities, we are discussing the derived quantities in physics, that how derived quantities develop from basic quantities, in which we discussed the area, volume, speed, power, momentum. These are the etc. kind of things are the derived quantities which we was discussed in our previous session. After that, we was discussed the prefixes as a sequential order from tera, giga, mega, kilo, deci, centi, milli, micro, nano, and pico. Prefixes representative the sequence in symbolic aspect I also covered here, like tera in T, kilo in K, and pico in small p. There tends to power, I also explained with you guys that tera having the prefix in tens to power 12. And after tera, we also discussed that after tera, it's peta, deca, nana, octa, other kind of higher order prefixes in positive sign also out there. In negative aspect, from deci centi towards the pico is represented by the tens to power minus 12. We also discussed in our previous session. Example of tera in the sense that 3 tera or trillions can be represented in 3 raised to power 12 meters in sense of length. After this slide, we are coming towards the scientific notation, जिसको हम उर्दू में कहते हैं साइंसी तरकीम, and why it is so much important in physics, because in physics we get the large amount or large digit or magnitude in numeric form. So to read and write down these kind of large numeric digit, it is very much difficult. So we need to represent these
numeric data, numeric digit in short form by using this scientific notation is the way out to explain the large amount of numeric data into a small amount. So that's the reason साइंटिफिक नोटेशन साइंसी तरकीब इसलिए इजाद की गई ताकि हम बड़े नंबर को छोटे डिजिट में रिप्रेजेंट करके बता सकें. Further, this is our starting of today's session about the conversion of units. And in conversion of units, you can say you can see that 4.08 into 10 to power minus 6 in kilometers. So this is uh, a length in quantity and magnitude. So we need to represent in meter instead of kilometer because the SI unit of length is in meter. So we need to modify and represent this magnitude in meter. So 10 to power minus 6 into 10 to power kilo towards the 10 to power 3. Simplify both things become the 10 to power minus 3. I think इसका अंदाजा सब लोगों को होगा कि जब भी बेसिस सेम होती हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती है. मतलब 10 टू पावर माइनस 6 10 टू पावर 3 इन दोनों को लिखा जा सकता है 10 टू पावर माइनस 6 प्लस 3. और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस 3 हमें हासिल होगा. तो ये सिंप्लीफिकेशन यूनिट कन्वर्जन के सेंस में भी बताई जाती है कि हम अलग अलग प्रीफिक्सेस को अगर एक साथ एक ही एंटिटी मैग्नीट्यूड में देखें तो उनको सिंप्लीफाइड एस्पेक्ट में इस तरह लिखा जा सकता है. अब ये जो एंटिटी बनी है 10 टू पावर माइनस 6 माइनस 3, ये आपको क्या लगता है कि किस में आई है? ये अब आई है 10 टू पावर माइनस 3 मिली के अंदर. दैट मीन्स 4.08 ये मिलीमीटर है. ठीक है. और अगर इस मिली से हटाकर आप 10 टू पावर माइनस 3 में लिखें तो वो भी एक तरीका है लेंथ को रिप्रेजेंट करने का. केस के मिली को आप मिली नहीं लिख रहे बल्कि 10 टू पावर माइनस 3 लिख रहे हैं तो उससे वैसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. फर्दर अगर आप यहाँ इसे देखें तो ये भी एक लेंथ है जो कि गीगा मीटर के अंदर है. गीगा 10 टू पावर 9 होती है तो -4 प्लस 9 सिंप्लीफाई होकर +5 बन जाएगा. तो ये इस तरीके से 4.08 10 टू पावर 5 मीटर बन जाएगा. तो ये भी एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ कन्वर्जन है जिसके जरिए से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. फर्दर माइक्रोमीटर 10 टू पावर -2 से सिंप्लीफाई होगा तो 10 टू -2 और माइक्रो 10 टू पावर -6 होता है. तो -2 और -6 एडअप होंगे तो -8 बन जाएगा. और इस तरह इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर. अच्छा, अब यहाँ देखें तो ये पिकोमीटर है. पिको 10 टू पावर -12 को कहते हैं. तो -4 -12 अगर सिंप्लीफाई होंगे तो -16 मीटर बनेंगे. और इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है -16 के सेंस में मीटर. तो ये कन्वर्जन है जो कि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिक डेटा न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होती हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में. तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस एसेंशियल है समझने के लिए आगे के टॉपिक्स. इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, अब हम उसकी तरफ मूव करेंगे जो कि अगेन कन्वर्जन है 150 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का फिर ये तरीका बताया गया है पूरा के 150 सेंटीमीटर क्यूब के 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करते हैं इसको. और तीनों सेंटी जब सिंप्लीफाई होते हैं तो ये 10 टू पावर -2 में आ जाते हैं. और जब ये -2 में आते हैं हर एक का सेंटी जो है 10 टू पावर -2 बनता है. इसका सेंटी -2, इसका सेंटी -2 10 टू पावर -2 और इस वाले लास्ट का सेंटी 10 टू पावर -2. तो -2 -2 -2 एडअप होके 10 टू पावर -6 बन जाता है. ओके. साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम ये भी जानते हैं कि हमेशा पॉइंट होता है टर्म के आखिर में. इसको सिंप्लीफाई करने की तरीकेकार क्या है कि इसके आखिरी पॉइंट को जम करके हम यहाँ लाते हैं और फिर यहाँ लाते हैं. हमने जम कितना किया? 2 टाइम्स. तो 10 टू पावर +2. और जब
राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो ये साइन प्लस की तरफ जाती है, और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये साइन माइनस की तरफ जाती है। अभी हमने जम किया फिलहाल राइट टू लेफ्ट, तो ये +2 होगी। अब टेंस टू पावर +2 और टेंस टू पावर -6 जो कि शुरू से ही चलता आ रहा है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 में से 6 निकलेंगे तो -4 बचेंगे। और ये जो मीटर 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 थे, ये तीनों मीटर मिला के मीटर क्यूब बन जाएगा। तो मीटर क्यूब को इस तरीके से लिखा जा सकता है 1.5 टेंस टू पावर -4 इंटू मीटर क्यूब। सिमिलरली ये आप अपने तौर पे समझिएगा कि इसके अंदर कन्वर्जन किस तरह की है। मैं इसमें हिंट दे देता हूँ थोड़ी आपको। एक मैग्नीट्यूड है जो कि 0.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लिखी हुई है, ये टर्म, और ये टेंस टू पावर -3। तो याद रखें जब भी इस तरह की -3 होती है तो उसको ऊपर से नीचे लिखा जाता है, तो वो टेंस टू पावर सॉरी +3 हो जाती है -3 के मुकाबले में। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन के नीचे लेके जाया जाता है। अब इसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है कि 1 ग्राम है, तो 0.4 और 1 ग्राम को अगर हम यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी कि टेंस टू पावर -3 और टेंस टू पावर 3 जो किलो बनता है, इनको एक साथ लिखा जा सकता है यहाँ पे ना, क्योंकि टेंस टू पावर +3 और -3 आवर में सिम्प्लीफाई होके वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए एक तरीकेकार ये है कि इनको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, ये एक वे आउट है। उसके बाद नीचे 1 सेंटीमीटर क्यूब था, तो आप जानते हैं जिस तरह हमने प्रीवियस यहाँ इसमें किया, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस तरह लिख के हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन every centimeter having 10 to power -2, 10 to power -2 and 10 to power -2 represent here. Combine all these 10 to power -2 become 10 to power -6 meter cube. And after that 10 to power 4 into 10 to power -3 can be simplified. That how? And this is the fraction having two parts, the upper part and down part. Upper part we call it's a numerator, and down part we call it's a denominator. The denominator magnitude we shift from this towards this one. So this will become 10 to power -3, and this 10 to power -6 towards 10 to power +6. So -3 plus 6 become +3, and minus meter cube from going denominator to numerator, it will be transformed to -3 from +3 2, and then simplified that this one coming towards, we all know that the point always represent after first digit, and here 0 is not first digit, 4 is first digit, so we shift that point, this one towards this one. So we moving in scientific notation from right to left, left to right, sorry, so that tends to power b -1, because we are moving from left to right, and from right to left it is moving in positive sign. So now we moving left to right, this one b tends to power -1. Both bases of tends to power -1 or and 3 simplified would be in tends to power +2, because of 3 minus 1 become +2, and at the end 4 into 10 to power 2 kilogram meter -3 having power. So we further moving towards the next aspect of today's session, which is the scalar quantity. Up till now, anyone of you, if have any kind of question, query, or difficulty in your mind, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have. So please ask. Otherwise, we continue our session. So here we have a scalar quantity.
So as per the definition, scalar quantities are those quantities if you are aware of that, and if you not aware of that, please note that definition which I explain you guys in verbal way. Why I'm not defining or explain the definition in right form, because it's a basic definition, and in prime and in your primary secondary classes you very well know these definitions. So that's the reason I'm not write down these things in my slide. So I'm only verbally communicate to you guys for reminder purpose. So scalar quantities are those quantities to represent scalar quantities, those quantities to represent those to represent scalar quantities. We do not need the direction. We only need to represent the scalar quantity by their magnitude. So by using magnitude, we represent scalar quantity. So scalar quantity only having its magnitude, not the direction. And examples of scalar quantities are mass, speed, distance, work. So as per their literal meaning, if we buy something like petrol, we are not mention the direction that to fill our fuel tank in each direction. We are not mentioning its direction. We only said to fill the fuel tank 2 liters, 3 liters. 2 or 3 liters are its magnitude, and it is enough definition to understand the scalar quantity. Speed, distance, work. These are also a scalar quantity. Direction is not mandatory to represent scalar one. So we only need its magnitude. Direction is not mandatory in scalar quantity. So scalar quantity के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को बता देना ही काफी है.
Good. Okay. Further, we moving towards the vector quantity after scalar quantity. So, what are vector quantity? You all also very well know about the vector quantity. Those physical quantities, to represent them by their direction and even as well their magnitudes, are called vector quantities. So, for the sake of example, we need to understand the vector quantities. So if we guide someone to reach at a particular place, we need to provide a particular person towards that destination by their direction, even as well the destination as well its direction with the magnitude. So example, someone asking about where is the 4K Chorangi, so we need to guide him to go straight and take a right and cover some distance of 4 kilometers, and after that move towards the east direction and then cover the distance the 2 kilometer, then you will be reached to your destination, which is the 4K Chorangi, then or your destination. So you can say, to represent that particular destination and guide someone by their direction, by their distance, displacement, you need to represent or set its direction, even as well its magnitude. So what are the examples of vector quantities? Vector quantities having example velocity, acceleration, force, and momentum. These are the examples of vector quantities. These quantities, even we can say, are drive physical quantities as well. After that, we start the session of measuring instrument. So measuring instrument we will cover in our next lecture. So सेशन जो कि आज का है, इसको यहाँ पर हम एंड करते हैं. आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले सेशन में, जो कि अप्लाइड फिजिक्स का थर्ड सेशन होगा. सो होपफुली आप लोगों ने जो सेशन है आज का उसे अच्छी तरह समझा होगा. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, क्यूरी और डिफिकल्टी इन योर today's session, please feel free to ask. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. Thank you very much.